Hello and welcome to NDTV 24/7. I'm Rohit Wellington. Let's begin with our top story. Russia will achieve the goals of its operation in Ukraine. That's what Russian President Vladimir Putin said, even as Moscow's invasion entered its second week and talks between the two countries began in Belarus. Vladimir Putin vowed on Thursday to continue fighting against Ukraine, according to a readout of a call with French leader Emmanuel Macron. Now, after that 90-minute call with the French president, Emmanuel Macron said that the worst is yet to come. On the ground, meanwhile, Russian forces have taken the Black Sea port of Kherson in southern Ukraine, the first major city to fall after a string of setbacks for Moscow. They also bound and encircle the strategic port city of Mariupol, which is without water or electricity. And NDTV's Vishnu Shom is in Ukraine, in the city of Lviv. He sent us this report on how children are taking refuge in bomb shelters. Well, I'm going to keep my voice down because there are infants actually sleeping in this area. Now, these children that you see behind me have made the journey from Kiev along with their parents. They are all okay. This is a children's shelter in the city of Lviv, where I am. This is in the western part of the Ukraine. It is the largest city over here. Thus far, it's been unaffected by the bombing, though air raid sirens do go off every now and again. There is palpable tension over here, and I can tell you it is through this area that... Come. Thank you. So, there's palpable tension in this area, but I can tell you that getting across from Poland to Ukraine has proven to be very difficult. Once we did actually come across, we saw these huge lines of people. There aren't very many Indians that we saw today, or South Asians, but certainly a large number of people in their cars who were actually trying to get across to the border. Now, that is a very long process which does take place. It's a painful process as well because people are out in the cold. But shelters like these have been set up, and it is very sad indeed that it has to happen. On the ground, Russian military is bombarding Ukrainian cities. There's shelling and explosions. Natalia Lutsenko reports from war zone, Ukraine. Once again, the Kremlin regime has demonstrated that its goal is to destroy the civilian population of Ukraine. In the evening, the aggressor launched a rocket at the Ministry of Defense and the railway station nearby. Literally in front of my eyes, I saw explosions in the sky and how the Ukrainian forces managed to neutralize the missile. In fact, hitting the evacuation heart of the country, where thousands of women and children are waiting for trains. Fortunately, there are no victims. One person was injured. Despite the explosion, Ukrzaliznytsia is operating, and all the Ukrainians, especially women with the kids and foreign students, are able to leave. Russia is shooting the civilian population with artillery. Kharkiv is under massive attacks. Russian troops seek to leave the ground. On the seventh day of the war, the building of Kharkiv City Council was attacked by cruise missile of the Russian occupying forces. The next attack on Kharkiv was stopped only the morning. The one enemy plane was destroyed. Also the day before, the Russians attacked with the cruise missiles and aimed at Freedom Square, attacking gymnasiums and maternity hospitals. Dozens of civilians and children died. People from all regions of Ukraine were resisting Russian troops. Kherson, small town and villages on the outskirts of Kiev and Sumy region are also defended in heavy fighting. Near Sumy, Russian troops struck a vacuum bomb at oil depots. These inhuman weapons are prohibited by the Geneva Convention. The Russian army does not neglect to attack the civilian population. Of course, Vladimir Putin and his entourage deny their war crimes. At the same time, sites that tell the truth about the war are blocked in Russia. They attack our churches, memorials and historical sites. This is what the real genocide against the Ukrainian people looks like. Natalia Lutsenko, specially for NDTV. For India, the major focus remains the safe evacuation of Indians. More Operation Ganga flights landed in India on Thursday. The government said that 18,000 Indians have left Ukraine since the advisories were first issued. The total number of Indians who have left Ukraine since our advisories were issued, we estimate is now near 18,000.
The pace of Operation Ganga continues to accelerate. During the last 24 hours, 15 flights landed in India, and we have brought back around 6,400 Indian citizens. Prime Minister Modi, who was campaigning in Uttar Pradesh, interacted with Indian students who returned from war-hit Ukraine. He spoke with them in Varanasi. ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे, मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। Close to 4,000 Indians, mostly students, returned today from Ukraine, flown back from neighboring countries by the Indian government. Rampal Godara, a medical student from Vinnytsia, says the battle in central Ukraine has intensified in recent days and that students like him were living under constant fear for their lives amid constant sirens of air raids and shelling. And to reach Romania, one has to take an arduous journey. सर वहाँ की कंडीशन ठीक अगर कंपेयर करें की वगैरह से, वैसे कंडीशन सर क्रिटिकल है, मतलब बॉम्ब बेरिंग और सायरन बजते हैं पूरे दिन, बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं। अगर कंपेयर करें कीव से तो कंडीशन ठीक है वहाँ की, मतलब बाहर जाना एकदम सेफ नहीं माना जाता वहाँ, मतलब बाहर बच्चे नहीं जा पा रहे, उनको डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए हमारे साथ। Students thanked the Indian Air Force for their rescue operation. शुक्रगुजार हैं हम इंडियन एयरफोर्स का भी, जो हम लोग को यहाँ तक लेकर आई। पूरे भारत के हम शुक्रगुजार हैं, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहीं, हम लोग सही सलामत अपने घर वापस आ गए हैं। इंडियन एम्बेसी ने जो बच्चों को ट्रीट किया, इट्स अनइमेजिनेबल, 5-स्टार ट्रीटमेंट, और बच्चों का प्रॉपर मेडिकल पूरा चेकअप किया उन लोगों ने, बच्चों को प्रॉपर बेड तक पर उन्होंने मील्स दी हैं बच्चों को। हमारी कोशिश थी परसों से जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि जल्द से जल्द फ्लाइट्स का इंतज़ाम हो ताकि हम अपने बच्चों को वापस घर पहुँचा पाएँ। कल बुकारेस्ट से 6 फ्लाइट्स निकली हैं, करीब 1300 बच्चे वापस घर के लिए रवाना हुए हैं, और उन 6 फ्लाइट्स में से 2 फ्लाइट्स C-17 ग्लोबमास्टर इंडियन एयरफोर्स की रही हैं। However, some students are critical of the government's response, questioning the lack of help and advance warning they got while inside Ukraine. अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती, ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है, पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? पता है प्रॉब्लम क्या है? खारकीव में, सूमी में, वहाँ उतारो कार्गो। एक्चुअली इंडियन आर्मी के ऊपर नहीं करेगी रशियन आर्मी हमला, वहाँ उतारो कार्गो और वहाँ से निकालो बच्चों को, क्योंकि वहाँ से उनके पास आने तक का ऑप्शन नहीं है। But now, even students from Russia are returning. Khushi Singh and Mansi Pandey are among the 8 classmates who are back from a medical university in western Russia's Cheboksary on their way back home to Gwalior. पैनिक ज़्यादा हो, इससे पहले हम अपने बच्चों को शिफ्ट करना चाहेंगे, इवैक्यूएट करना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति ऐसी हुई थी कि उस समय हम शिफ्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों को शिफ्ट नहीं कर पाए, और एक बच्चे की इवन कैजुअलिटी भी हो गई है, और भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इवन यूक्रेनियन ह्यूमन शील्ड्स के जैसे यूज कर रहे हैं,
तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों के साथ ये स्थिति क्रिएट हो. The ones who were traveling with me were also students from different countries, different universities, and they were from Russia as well. And they were also, because of this war situation, they were also returning back to this country. While the number of evacuation flights have increased manifold and have brought relief to families here in India, the government still has a tough task ahead of it of rescuing students who are still stuck in areas along the Russian border. Bureau report for NDTV. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin has said that 3,000 Indians are being held hostage by Ukrainian authorities in areas of conflict. Their cannons, and they are taking foreign citizens hostage, thousands of young people, students who were studying in Ukraine colleges. So for more than one day, they kept more than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there, including 576 people in the city of Sumy. Neo-Nazis opened fire. Meanwhile, today there was a virtual meeting of Quad leaders. Prime Minister Modi participated in that meeting along with leaders of United States, Australia and Japan. The leaders discussed developments in Ukraine. The Prime Minister's office said in a statement that Prime Minister discussed humanitarian implications of the crisis and emphasized on the need for dialogue and diplomacy. Meanwhile, President Biden has tweeted, "I met with my fellow Quad leaders, Prime Minister Scott Morrison, Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Kishida Fumio about Russia's ongoing attack on Ukraine and our commitment to sovereignty and territorial integrity around the world, including in the Indo-Pacific." 57 seats of eastern Uttar Pradesh spread across 10 districts voted on Thursday in the penultimate phase of the UP Assembly elections. Among the key candidates, Chief Minister Yogi Adityanath contesting his first Assembly poll from Gorakhpur. So votes were cast in the penultimate phase of the UP Assembly elections. Meanwhile, Prime Minister Modi on Thursday campaigned in Uttar Pradesh and said that BJP's victory in the state assembly polls was necessary as the state is moving on the development path and it should not stop now. Speaking in Jaunpur, the Prime Minister termed the previous Samajwadi Party government Mafia-wadi or soft on the mafia. पहले के हाल आपको याद होगा, इन गौर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है, ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। इतना ही नहीं, परिवारवाद से बिल्कुल मुक्त। भाइयों बहनों, इन माफियावादियों की नीयत क्या रही है, ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। So just one more phase to go in UP elections, and the main rivals of the BJP, Akhilesh Yadav and Mayawati, were also out campaigning in the state. Pranoy Roy spoke exclusively with Akhilesh Yadav and Mayawati. The BJP is dividing Hindu-Muslim. Is that working? देखिए, उन्होंने कोशिश कैराना से की, मुजफ्फरनगर से की। पहले फेज से ही वो चाहते थे कि डिवीजन इस तरह का हो। आप उनकी भाषा देखिए, जो उनकी लीडरशिप है, क्या भाषण दे रही है। BJP is saying with you law and order will go worse. नहीं, वो तो स्टैटिस, अगर आप आंकड़े देखेंगे, जो NCRB के आंकड़े हैं, आप देखिए सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो यूपी में है, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स कहीं हैं तो यूपी में है, अगर कहीं भी IPS फरार है तो यूपी में है। एक व्यापारी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी के, वो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है, वसूली के लिए उसे मार दिया जाता है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। कि कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? लेकिन हम लोगों से बात करें तो बोलते हैं जी पहले रंगदारी थी, किडनैपिंग थी, उठा के ले जाते थे, अब नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने, आप टाइमलाइन चेक करना, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि यूपी में पहले अपराधी और इस तरह के लोगों को उठा ले जाते थे, उसी दिन आगरा में एक बच्चे का अपहरण हुआ और व्यापारी को पैसे 25 लाख रुपए नहीं दे पाया,
2 दिन बाद उसके बच्चे की हत्या हो गई। आज भी अगर अखबार उठा करके देखेंगे बेटियों की छेड़छाड़ की लगाम घटनाएं आप देख सकते हो। अगर ये बताइए कि अगर इस बार आप चुनाव जीत गए तो पिछली बार से जो अब नई सरकार चलाएंगे पिछली बार से कैसे अलग होगी? देखिए, क्योंकि आप जब सरकार में और मुख्यमंत्री पहली बार बनते हैं तो बहुत सारी चीजें आप नई सीखते हैं। इस बार क्योंकि 5 साल विपक्ष में रहे हैं, पहले चलाने का मौका मिला था। अगर जनता मौका देगी तो मैं समझता हूँ हम लोग मिलकर के पहले से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। इस क्राउड में इतना जोश है, इतना बड़ा क्राउड, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा इतना कैंपेन नहीं किया इस बार। वो ठीक बात है कि थोड़ा कम कर लिया? मेरा अपना देखो काम करने का मेरा तरीका होता है। जी हाँ। जब मेरा पहला प्रोग्राम आगरे में हुआ था, मैंने उस दिन बता दिया था, पूरे देशवासियों को बता दिया था, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करते। ना मैं कभी रोड शो करती हूँ, ना मैं गली मोहल्ले में जाती हूँ। हमारा काम करने का तरीका, मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने लोगों को कैडर के आधार पे लोगों को त्याग किया। तो हमें दूसरों की नकल नहीं, बल्कि अब तो दूसरी पार्टी के लोग हमारी नकल कर रहे हैं धीरे धीरे। एक और चीज लोगों कह रहे हैं कि बीजेपी और आप थोड़ा तालमेल है कुछ है। नहीं आपका अब ये तो विरोधी लोग बोल रहे हैं ना, ये जो विरोधी पार्टियां हैं, ये खास तौर से समाजवादी पार्टी, उनका तो इतना बुरा हाल है सपा का जो है। जब मैं पूरे यूपी में गई हूँ, खास तौर से पश्चिमी यूपी में कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जहाँ उनका अधिकार बनता था वहां तक तो उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए नहीं, मतलब तो वो तो वैसे ही इनसे बहुत ज्यादा खफा है, इस बार नाराज है मतलब। लेकिन हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भी हम आपको बताएंगे, जो लोग कह रहे हैं हमने अति पिछड़े वर्गों को, मेरे ख्याल जितने हमने टिकट दिए किसी भी पार्टी ने इतने टिकट नहीं दिए है। अगर मान लीजिए किसी कारण से स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिला, मैं जो आपको बता रही हूँ बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी। जो ये सवाल पूछ रहे तब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। हाँ देखो मैं फंस जाऊंगी। वेरी गुड टू टॉक। एसपी खराब ज्यादा है कि बीजेपी खराब ज्यादा है? दोनों ही जो पार्टियां हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे। And that's a wrap on this bulletin from the entire team. Thanks for watching. Goodbye.